Good afternoon everyone, I am Raghavdeep Sharma and you are watching SIPPHO channel, a channel where health comes first. In collaboration with the Indian Pharmaceutical Association Maharashtra State Branch Students Forum. SIPPHO channel aims to educate and inform common masses with latest news and some crucial health related information. It is a series consisting of 4 episodes airing at 3 pm and 9 pm on 2nd and 3rd February. We shall have an informative webinar on learning disabilities. This will be followed up with a public service announcement on COVID-19 and an interview with a doctor who is working hard at the front line to tackle the current situation. So stay tuned till the end. Now before getting right into today's episode, let's look at the headlines making waves into the healthcare sector. According to a study, no evidence of transmitting COVID-19 virus was found through breastfeeding. The study was published in the journal Pediatric Research. The authors found that whilst a low proportion of breast milk contained COVID-19 genetic material, this did not translate into the presence of infectious replicating viral particles or lead to evidence of clinical infection with SARS-CoV-2 in breastfeeding infants. The study finds lung abnormalities in long COVID-19 patients with breathlessness. Researchers from Oxford, Sheffield, Cardiff and Manchester have identified abnormalities in the lungs of long COVID-19 patients who are experiencing breathlessness. The researchers have said that these abnormalities can't be detected through routine tests. On February 1st, during the budget announcement, the Government of India announced a national telehealth program for counselling, which will include a network of 23 mental health centers of excellence with NIMHANS being nodal center and Indian Institute of Information Technology, Bangalore providing the technological support. FDA grants Moderna's COVID-19 vaccine full approval, second only after Pfizer's vaccine back in August. In Nagpur, district administration's fight against COVID-19 gets a boost as All India Institute of Medical Sciences will guide rural doctors through eSanjeevani OPD to tackle Omicron cases. Now we have an interview with someone who has been fighting with COVID-19 at the front line. We have an interview with Dr. Mutha, MBBS from Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram, Nagpur. A very warm greeting to everyone. Today we are having an interview with a general practitioner. Introducing Dr. Vijay Mutha. Dr. Vijay Mutha is a general practitioner with 40 years of experience. He did his MBBS from Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Nagpur. We all welcome you, doctor, and now let's start with the alarming questions. So, how would you explain the current conditions of COVID in India? Dear friends, I am Dr. Vijay Mutha from Nerul, Navi Mumbai. I am a general practitioner. Today we will discuss about the coronavirus. The coronavirus, this COVID-19, this virus created pandemic in India. A viral disease which spreads from one to another by close contacts and via aerosols and respiratory droplets that is exhaled from coughing, sneezing, talking and breathing. Currently in India, the COVID-19 is under good control, but here and there few cases are coming up, which again gives the third wave condition. Now there are few new genome sequence: alpha, beta, gamma, eta, lota, kappa, zeta, delta, and now Omicron. This Omicron is again a threat to India. But friends, we should not be frightened for this Omicron. As per reports from various places and countries and studies done, they say it will show mild symptoms and not a severe disease.
or it will not be dangerous to life. And if at all if we have two shots of vaccines, thus disease will show the minor symptoms. That is noteworthy. And what are the common issues among COVID afflicted patients you have observed? Now we'll see the common issues amongst the patients of COVID-19. They suffer from mild to moderate grade of fevers, sneezing, coughing, body ache, malaise, headache, general weakness, etc., which are the symptoms of COVID-19. 3. These symptoms are also seen in influenza, that is cold and fever. We have to differentiate these from the COVID. 3. Usually after treating such patients, the COVID-19, some patients shows various types of symptoms which are after effects of viral infection, like discrete pain, headache, malaise, weakness, joint pains, etc. Some patients show psychological changes and some goes into depression. We have to treat these patients very patiently. Especially the old age patients and the comorbid patients they are having heart disease, BP, cancer, etc. When these patients are told that they are having coronavirus disease, they get exhausted and emotionally exhausted. So these patients should be treated again very patiently. Though the disease is deadly, but it is very less in percentage. This should be told to them, and we should we should encourage them, give courage and support. If they are diagnosed COVID positive, then they should take necessary treatment from COVID experts only and should not take medicines at their own. After diagnosing the COVID-19, they should be isolated and self-quarantined. If the condition is severe and any comorbidity is there, like diabetes, BP, cancer, etc., then they should get hospitalized for better treatment and oxygen support, etc. And what measures would you suggest for the same? Now I shall give you some wellness tips, some measures and precautions. Number 1 is avoid going to crowded places and wandering here and there without any cause. Number 2 is avoid non-essential shopping and traveling. Number 3 is always use good quality mask. If you have it, then you can use the handkerchief also. Number 4 is, if at all we go in market, keep safe distance or about 6 feet or 2 meters. This is called a social distancing. Then clean your hands frequently with soap and water. Use alcohol-based hand rub. Always clean the surfaces you touch in your home, in your office, or anywhere you go. 3. You always avoid shake hands with the friends or anybody. Do namaskars only. Now, do not touch your eyes or face. Avoid it because this virus enters in the body from the eye and oral mucosa. Steam inhalation is the best to prevent the viral infection. This prevents the virus going from nose to the lungs. Do the steam inhalation for about 5 to 7 minutes only. When you feel yourself caught by COVID fever, which might happen, try to shift your mind from this situation. Take plenty of sleep, which helps in support your immune system. Eat fresh hot meals, fresh fruits, citrus fruits like orange, apple, bananas, etc. And eat the fruits as much as you can.
Eat enough fibers because it keeps healthy digestive system and gives fullness in stomach. Eat vegetable, fruits, pulses in all meals. 3, Always keep your body hydrated with liquids or water. Most important is in a quarantine period and otherwise also do regular exercise, do meditation or do pranayams, etc., which will keep you physically and mentally fit and healthy. This will help in fighting corona successfully. And finally, what advice would you give us for a healthy living? Lastly, most important, one can catch COVID after receiving 2 shots of vaccine also, because no vaccine is 100% protective. So my advice is to take maximum precautions. Don't go in crowds, etc. Vaccine will help in protecting the body from developing severe diseases only. Mind it, this disease may be with fever or without fever, may be with cough or without cough. Some may be symptomless also. This condition is called asymptomatic, and we don't know who that person is. So wear mask, keep 6 feet distance, don't go in crowded places. So कहते हैं ना, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी. धन्यवाद. Thank you very much, Doctor, and we are so grateful to you for addressing these frequently asked questions. Your answers really gave us the idea to keep our guards up to fight this extensive pandemic. Thank you to our viewers. Signing off, your interviewer Nisha. Thank you. This is a public service announcement. Nearly 70% of breast cancers are found by self-exam. We can look for breast abnormalities in the following ways. Physical examination. Perform this test by lying down. Look out for lumps, swelling, thickening in the breast, underarms, or for enlarged lymph nodes. While lying down, extend your right elbow outwards and your right hand below your head. Use the pads of your 3 middle fingers and put pressure on the breast tissue. Use 3 different pressure levels, that is light, medium and firm. Move in clockwise and anti-clockwise direction. For visual examinations, stand with arms by your side in front of the mirror. Check for any of the following: dimpling or puckering of skin or nipple, persistent rash or change in skin, nipple inversion, retraction, bleeding or discharge. The best time for a breast self-exam is 1 week after menstruation. Remember, self-examination complements breast cancer screening, but it is not a substitute. Thank you. Now, let's take a look at what Miss Anushka Dhande and Miss Pragya Jain have for us through their informative session on learning disabilities. Good afternoon, everyone. Myself, Pragya Jain. I warmly welcomes you here. So today, me and my friend Anushka Dhande are gonna talk about learning disabilities. What are the learning disabilities? Well, problems that affect brain's ability to receive, process, analyze, or store information. These children with a learning disability may have difficulties in reading, writing, speaking, listening, understanding mathematical concepts, and with general comprehension. अगर मैं हिंदी में समझाऊँ तो ऐसा कह सकते हैं कि जो ये वो बच्चे हैं जिन्हें लिखना, पढ़ना, समझना, बोलना, सुनना, इन सब में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. लेटर्स या फिर जो मैथ्स के नंबर्स होते हैं उन्हें समझना, उन्हें बोलना, उन्हें लिखने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. तो लर्निंग डिसेबिलिटीज उन्हें बोलते हैं. तो
टोटल 7 डिसेबिलिटीज है, बट हम डिसेबिलिटीज बोले उससे अच्छा हम बोलेंगे डिफिकल्टीज, लर्निंग डिफिकल्टीज. What are the difficulties that people face, that students face? So there are 7 types of learning disabilities. Well, learning difficulties, I would say. So the first one is dyscalculia, dysgraphia, dyslexia, central auditory processing, visual perceptual, or you can say visual motor deficit, non-verbal learning disabilities, and language processing disorder. इन सब के बारे में देखते हैं कि ये 7 जो टाइप्स है, जो हमने देखे, जो नाम सुने, इनके ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती है. तो द फर्स्ट वन इज डिस्कैल्कुलिया. Dyscalculia affects the way in which the brain comprehends number and mathematical symbols. Individuals with this disorder will have trouble with learning the order of numbers, counting, as well as difficulty with telling time. मतलब डिस्कैल्कुलिया वर्ड में ही है, कैलकुलिया कैलकुलेशन, यानी कि इन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, उनके नंबर्स को समझने में, उनको नंबर्स को काउंट करने में, या फिर टाइम बताने में, या फिर नंबर्स के साथ खेलने में, यानी कि जो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो छोटे छोटे बेसिक्स करते हैं, उनमें भी इन बच्चों को प्रॉब्लम होती है. मूविंग अहेड विद सेकंड डिसेबिलिटी, दैट इज डिस्ग्राफिया. This disability affects the ability to write, and you will notice bad handwriting with disappropriate spacing between words. Dysgraphia affects the individual's fine motor skills and will most likely affect space planning on paper, the ability to think and write at the same time, and spellings. जैसे कि आप वहाँ पे एक फोटो देख सकते हैं, एक बच्चे ने कुछ लिखा है वहाँ पे, बट प्रॉपर हैंडराइटिंग नहीं है, प्रॉपर वर्ड्स के बीच में गैप नहीं है, स्पेस नहीं है, लेटर्स के बीच में प्रॉपर स्पेस नहीं है. इन द सेंस डिस्ग्राफिया मतलब ये है कि जो लिखने की एबिलिटी होती है उसमें वो इफेक्ट हो जाती है एक बच्चे के अंदर, और बैड हैंडराइटिंग आती है, फिर वर्ड्स के बीच में स्पेस देने में प्रॉब्लम आती है, फिर जो स्किल्स होती है, ये जो स्किल्स है वो इफेक्ट हो जाती है बच्चे के अंदर. एंड इसीलिए स्पेलिंग्स में और स्पेलिंग्स में, लिखने में, जब हम सोच रहे, जो हम सोच रहे वही सेम टाइम पे लिखना विद करेक्ट स्पेलिंग, इसमें भी उस बच्चे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. मूविंग अहेड विद डिसलेक्सिया, ये हमने सुना है, बट देखते हैं कि ये होता क्या है एक्चुअली. Dyslexia is a disorder that affects reading and language related comprehension skills. It is in fact also known as language based learning disability. मतलब ये लैंग्वेज रिलेटेड है, लैंग्वेजेस को समझना, सीखना, पढ़ना, इसमें प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को. दिस डिसऑर्डर कैन अफेक्ट रीडिंग, राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, रिकॉल, स्पेलिंग एंड इवन स्पीच. मतलब जो बच्चा डिसलेक्सिया के थ्रू जा रहा है, उस बच्चे को पढ़ना, लिखना, इस सब में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. वो लेटर्स के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि आप वो डायग्राम में देख सकते हो, बी दिखता है, पी क्यू 9 दिखता है, 9 पी दिखता है, बी डी दिखता है. मतलब बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे उन लेटर्स को समझने में. सो पढ़ने में, फिर उसके बाद लिखने में, या फिर अगर आप उनको पैराग्राफ दोगे तो वो प्रॉपर नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि लेटर्स के बीच वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे. तो डिसलेक्सिया ये ऐसी है जिसमें लैंग्वेजेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी पड़ती है. मूविंग अहेड, सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर. सेंट्रल ऑडिटरी यानी कि इट इज रिलेटेड टू द हियरिंग थिंग्स. मतलब दिस डिसऑर्डर डील्स विद द वे इन विच ब्रेन प्रोसेसेस और इंटरप्रेट्स द ऑडिटरी इनपुट्स गोइंग टू एन इंडिविजुअल. मतलब जब हम कुछ सुनते हैं तो उन्हें समझते हैं और फिर हम रिएक्ट करते हैं, बराबर. बट ये बच्चे जो सुनते हैं उन्हें वो प्रॉपरली नहीं सुनाई देता है, या फिर वो उस आवाज को प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं. जैसे कि द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिमिलर या डिफरेंट साउंड्स इन वर्ड्स व्हाइल आल्सो बीइंग एबल टू टेल वेयर द साउंड इज कमिंग फ्रॉम एंड विच ऑर्डर. यानी कि जो सेम साउंड्स वाले वर्ड्स होते हैं, या फिर जो वर्ड्स की स्पेलिंग सेम है लेकिन साउंड डिफरेंट है, उन चीज़ों को भी वो नहीं समझ पाते हैं, उन वर्ड्स को नहीं समझ पाएंगे, उन साउंड्स में वो लोग फर्क करना नहीं समझ पाते हैं. सेकेंड, अगर कुछ आवाज़ आ रही है तो वो आवाज़ कौन से डायरेक्शन से आ रही है, कौन से तरफ से आ रही है, वो भी वो लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं.
इंडिविजुअल्स में फाइंड इट हार्ड टू ब्लॉक बैकग्राउंड नॉइस, यानी कि अगर वो किसी चीज, अभी कोई टीचर हमें सिखा रहा है तो हम उनकी आवाज सुनेंगे, बट जो आजू बाजू की आवाजें रहती है, कोई फ्रेंड बात कर रहा हो या फिर चिड़िया की आवाज हो, तो वो हम यूजुअली क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, उन्हें ब्लॉक कर देते हैं और हम सिर्फ टीचर की बातों पे ध्यान देते हैं. बट ये बच्चे जो एपीडी के थ्रू जा रहे हैं, वो बच्चों को बैकग्राउंड नॉइस को ब्लॉक करना, उसे इग्नोर करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो वॉइस भी इक्वल ही उनके कानों में पड़ती है, तो वो उन्हें ब्लॉक नहीं कर पाएंगे. फर्दर हम जाते हैं विजुअल परसेप्शन और विजुअल मोटर डेफिसिट. विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कैन कॉज इश्यूज विद द वे द ब्रेन प्रोसेसेस विजुअल इंफॉर्मेशन. विजुअल यानी कि क्या, जो हमें दिखे. तो ये बच्चे जो विजुअल परसेप्शन या विजुअल मोटर डेफिसिट डिसऑर्डर के थ्रू फेस कर रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम क्या होती है कि उनका ब्रेन काम नहीं कर पाता है, मतलब जो वो देख रहे हैं वो उन्हें समझ नहीं पाते हैं, उन्हें पहचान नहीं पाते, उन चीज़ों में उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. There are many different types of processing disorders and many different symptoms which can include trouble drawing or copying. यानी कि अगर कुछ बोर्ड पे स्ट्रक्चर्स है, कुछ डायग्राम्स है, उन्हें सेम ड्रॉ करना, उन्हें कॉपी करना, वर्ड्स को कॉपी करना, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो कॉपी नहीं कर पाते, वो बोर्ड पे दिखी हुई चीज या फिर कोई भी सामने दिखी हुई चीज वो नहीं समझ पाते हैं, उन्हें विजुअल प्रॉब्लम्स होती है. इनएबिलिटी टू डिटेक्ट डिफरेंसेस इन शेप्स, यानी कि अब सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, हमें पता है कि इन शेप्स में क्या डिफरेंस है, बट इन बच्चों को इन शेप्स में डिफरेंसेस नहीं समझ आते कि उनमें क्या डिफरेंस है, कैसा है वो शेप्स एंड ऑल, या फिर लेटर्स कैसे होते हैं, या फिर लेटर रिवर्सल्स, यानी कि वही जो मैंने बोला था ना, पी बी दिखेगा, बी डी दिखेगा, उन्हें विजुअल प्रॉब्लम्स होती है, वो उन्हें नहीं समझ पाते हैं कि उनके सामने बेसिकली क्या लिखा है, क्या, और उन्हें वो कैसे कॉपी करे, कैसे समझे, वो उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. सो मूविंग अहेड विद नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर. अब ये NVLD है क्या? It is a learning disability that causes difficulty with motor, visual, spatial, and social skills. Children with NVLD are often well spoken and can write well, but struggle with the subtle social cues and comprehension of abstract concepts. बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छे से लिखेंगे, समझेंगे, बट इनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम इन पर्सन मिलते हैं, आमने सामने मिलते हैं, तो हम कैसे अपने फेशियल एक्सप्रेशंस बनाते हैं, हम हेलो करते हैं विद अ ब्रॉड स्माइल, या फिर हम गले मिलते हैं, या फिर हम हग करते हैं, सल्यूट करते हैं, हाई फाइव करते हैं. तो जो हम नॉन वर्बली करते हैं, यानी जो हम इन पर्सन करते हैं, वो चीजें इन्हें नहीं समझती है, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं समझेंगे कि ये सामने वाला बंदा क्या बोलना चाहता है. सुनेंगे वो लोग, समझेंगे, लेकिन उनके जो एक्सप्रेशंस होंगे, जो सामने वाले पर्सन के एक्सप्रेशंस होंगे, वो उन्हें डिस्टिंग्विश करना प्रॉब्लम हो जाती है. देन बेसिकली सोशली जब ये लोग मिलते हैं तो उन्हें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसे डिसऑर्डर्स को फेस करने वाले बच्चों को. नेक्स्ट, that is the last one, language processing disorder, LPD. This refers to a difficulty in using language to express yourself. LPD may also result in difficulty in understanding spoken language in spoken or written form. People with this disorder have difficulty reading, spelling, writing, and even speaking. मतलब ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ये है कि इसमें क्या होता है कि डिफिकल्टी फेस करते हैं बच्चे लैंग्वेज को समझने में या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करने में. उनको पता है उन्हें क्या बोलना है, उनको पता है उन्हें कैसे बोलना है, उन्हें बेसिकली क्या बोलना है, बट उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें कैसे बोलना है, किस लैंग्वेज में बोले, या फिर अगर उन्हें लैंग्वेज भी पता है तो प्रॉपर वो वर्ड्स उनके मुंह से नहीं निकलती है. जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको ये समझा रही हूँ लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होता है करके. सो आई नो कि मैं आपको इंग्लिश में या हिंदी में समझा रही हूँ, क्या वर्ड्स एग्जैक्टली मुझे यूज करना है मुझे पता है, बट जो बच्चे इस डिसऑर्डर के थ्रू गुजर रहे हैं, उन बच्चों को एक्सप्लेन करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करना या फिर दूसरों तक पहुंचाना, इन सब चीजों में डिफिकल्टी होती है.
और यू कैन ऑल्सो से कि उन्हें पढ़ने में भी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो हम पढ़ते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं. अभी हमारा देखा तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस है जो हम पढ़ते हैं. तो वैसे इन्हें भी वो लैंग्वेजेस को डिस्टिंग्विश करना, डिफ्रेंशिएट करना, इसमें प्रॉब्लम्स फेस होती है. तो वो ना ही ठीक से पढ़ पाते हैं, ना ही ठीक से स्पेल कर पाएंगे कि वो क्या लिखा है, फिर ना ही वो लिख पाएंगे, क्योंकि अगर पढ़ ही नहीं पा रहे, स्पेल ही नहीं कर पा रहे, तो लिखेंगे कैसे? और अगर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो बोलेंगे कैसे? तो इन शॉर्ट उन्हें लैंग्वेज बैरियर हो जाता है, एंड फिर वो नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो ये थे हमारे 7 डिसएबिलिटीज यानी कि डिफिकल्टीज जो बच्चों में पाई जाती है रिलेटेड टू लर्निंग, रिलेटेड टू वर्ड्स एंड ऑल. सो एक मूवी भी बनी थी विच इज तारे जमीन पर. इफ यू हैव हर्ड, इफ यू हैव सीन, इट्स वेल गुड, यू माइट नो अबाउट इट. बट अगर आपने नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज वॉच दैट मूवी. यू विल नोट अबाउट दिस, यू विल गेट सम इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस. बेसिकली वो मूवी डिसलेक्सिया के बारे में ही थी, अ पर्टिकुलर डिसेबिलिटी विच आई हैव डिस्कस्ड. तो उसमें जो ईशान था, ही वॉज गोइंग थ्रू दैट डिसलेक्सिया, एंड ही वॉज उसके पेरेंट्स उसको नहीं समझ पाए. उसके पेरेंट्स को लगा कि वो मिसशिफ कर रहा है, वो बदमाशी कर रहा है, और जानबूझ के वो नहीं पढ़ रहा है, या फिर वर्ड्स प्रॉपर नहीं लिख रहा है. डिसलेक्सिया, ना, आई टोल्ड यू कि लेटर्स उनको उल्टे दिख रहे, वर्ड्स प्रॉपर नहीं समझ रहे उन्हें. तो उन्हें उसके पेरेंट्स को लगा बेसिकली कि वो मस्ती कर रहा है, इसलिए उसको हॉस्टल भेज दिया. एंड जिसकी वजह से ईशान वेंट थ्रू अ बैड फेस, कि मतलब उसके पेरेंट्स ने उसे घर से निकाल दिया, हॉस्टल भेज दिया, दूर कर दिया खुद से एंड ऑल. सो बट ही वॉज गाइडेड विद अ बेस्ट टीचर, आई वुड से, एंड इसलिए वो उसका फ्यूचर ब्राइट हो चुका है. So I'll just have a request, means I'll just give you a short, means I will request you that please, अगर आप ऐसे कोई किसी इंसान से मिलते हो जिसे कोई भी ये टाइप का डिसेबिलिटी है या फिर कोई डिसऑर्डर है, तो प्लीज उन्हें दूर मत करना अपने आप से. एटलीस्ट अगर वो आपकी फैमिली मेंबर है तो स्पेशली दूर मत करना. गिव that person some love, some attention, some support. That person will definitely cope up with this difficulty. एंड अगर कोई आपको सोशली मिल जाए तो भी उन्हें सपोर्ट करना, उन्हें अपने आप से बेसिकली अवॉइड नहीं करना, एंड ना ही उन्हें सेपरेट करना. उन्हें ऐसा मत दिखाना कि दे आर डिफरेंट, दे आर वन ऑफ अस. इट्स जस्ट दैट दे आर गोइंग थ्रू सम डिफिकल्टी. Well, moving ahead, there are some characteristics of learning disabilities. So we'll go according to the age wise. First comes a preschool age, that is from 1 to 4, you can say. जो nursery play groups के बच्चे होते हैं ना, उनके characteristics क्या होते हैं वो हम देखते हैं. You will notice that your child is having difficulty with zippers, buttons, and tying up shoelaces. यानी कि बच्चा जिप करने में कुछ भी जिपिंग चीज होगी तो उस जिप नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली, बटन्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, एंड बटन्स प्रॉपर्ली लगा नहीं पाएगा, फिर शू लेसेस प्रॉपर्ली बांध नहीं पाएगा. आप कितना भी सिखा दो बट वो शू लेस प्रॉपर्ली नहीं बांध पाएगा. फिर जो राइमिंग वर्ड्स आपने सुने होंगे, कैट, बैट, वूल, कूल, तो ये जो राइमिंग वर्ड्स है हमें समझ में आती है, बट उन बच्चों को उन राइमिंग वर्ड्स को समझने में थोड़ी डिफिकल्टी फेस होंगी. फिर प्रोनाउंस करना, कोई भी वर्ड को प्रोनाउंस करना, जैसे कि अब बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चों में भी होती है, बट जो स्पेशल बच्चे होते हैं, यानी कि ये जो डिफिकल्टीज को फेस कर रहे होते हैं, उन्हें काफी टाइम लग जाता है एक ही वर्ड को सीखने में. चाहे आप कितने बार भी सिखा दो, लेकिन उन्हें टाइम जरूर लगेगा, बट वो सीखेंगे. सो हैव सम पेशेंस. तो प्रोनाउंस करने में भी डिफिकल्टी होगी. फाइंड इट हार्ड टू फाइंड द करेक्ट वर्ड. सही वर्ड को फाइंड करना, यानी कि आप ABCD डिक्टेट करोगे, बट करेक्ट लेटर कौन सा होगा उस चीज को फाइंड करने के लिए उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा. फिर ट्रबल लर्निंग शेप्स, डेज ऑफ वीक्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स, यही सब तो हम बच्चों को सिखाते हैं ना, कि वीक में 7 डेज होते हैं, जनवरी, फरवरी मंथ्स के होते हैं, एंड अल्फाबेट्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, ये हम बच्चों को सिखाते हैं. लेकिन इन बच्चों को इन चीजों को लर्न करने में, समझने में बहुत डिफिकल्टी होती है, बहुत ट्रबल फेस करते हैं ये लोग. डिफिकल्टी इन लर्निंग रूटीन्स और डायरेक्शंस, यानी कि ईस्ट वेस्ट क्या होता है, रूटीन्स यानी कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, या फिर मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट,
जो बेसिकली रूटीन्स होती है, डेली रूटीन्स होती है या फिर डायरेक्शंस होती है, उन चीज़ों को भी ये नहीं समझ पाते हैं। फिर लास्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज प्रॉब्लम्स विद हैंडलिंग सीजर्स, सीजर्स को कैसे पकड़ने हैं, क्रेयॉन्स कैसे पकड़ने हैं, या फिर लाइन के अंदर कलर कैसे करना है, ये चीजें भी इन्हें थोड़ा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है. Moving ahead to the next age group, that is from 5 to 9. So in this age group, your child will face difficulty in merging sounds to make words. जैसे कि अब मुझे पता है योर कैसे साउंड करता है, चाइल्ड कैसे साउंड करता है, डिफिकल्टी कैसे साउंड करती है, बट ये बच्चे जो थोड़ी सी डिफिकल्टीज, एक्स्ट्रा डिफिकल्टीज है इनके लाइफ में, उनको फेस करते हुए इन बच्चों को जो साउंड्स होंगे डिफरेंट वर्ड्स के, डिफरेंट लेटर्स के, उन्हें मर्ज करके एक वर्ड बनाने में डिफिकल्टी होती है. फिर ट्रबल टेलिंग टाइम या फिर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जैसे कि बचपन से हमने देखा होगा या फिर काफी देखे होंगे कि पेरेंट्स जब बच्चों को घर लेके आते तो वो उन्हें पूछते, अच्छा मुझे बता कि आज दिन भर में आपने क्या किया, आज क्या हुआ स्कूल में, आज कैसा गया दिन. तो वो बच्चा सीक्वेंस में बताता ना कि पहले हमने ये किया, फिर हमने वो किया. तो ये जो बच्चे होते हैं वो सीक्वेंस नहीं बता पाएंगे. वो भले ही आपको बता दे कि उनका दिन कैसा गया, बट कौन से सीक्वेंस में हुआ वो नहीं बता पाएंगे आपको. फिर रिपीटेड इश्यूज विद स्पेलिंग्स, जो मैंने बोला स्पेलिंग्स प्रॉब्लम होती है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम्स होती है, बेसिक वर्ड्स जो रहेंगे जो पढ़ते हुए हम देखते हैं वो वर्ड्स भी उन्हें आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम हो जाएगा. बेसिक वर्ड एग्जाम्पल द, THE, उसे में डिफिकल्टी होती है. प्रॉब्लम्स एसोसिएटिंग लेटर्स विद देयर करस्पॉन्डिंग साउंड्स, मतलब वही साउंड्स देखना एंड ऑल, समझना एंड ऑल प्रॉब्लम होती है. स्लोनेस व्हेन इट कम्स टू लर्निंग अ न्यू स्किल, जब आप इन्हें कुछ नई चीज सिखाओगे, क्योंकि ये एज एक्चुअली होती है जब हम न्यू स्किल्स सीखते हैं, छोटी छोटी नई नई स्किल्स सीखते हैं. बट जब नई स्किल्स सीखने की बात आएगी तो इनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है नॉर्मल बच्चों से. नई स्किल को अडेप्ट करना इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है. मूविंग अहेड विद द लास्ट एज ग्रुप, दैट इज 10 to 13. ये एक्चुअली जो डिसेबिलिटीज है बेसिकली बच्चों में ही देखी जाती है, बड़ों में बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि प्रॉपर डायरेक्शन में इन्हें ट्रेन किया जाता है, फिर वो लोग इम्प्रूव हो जाते हैं. इसलिए मैंने बोला कि ये डिसेबिलिटी लाइफ टाइम नहीं है. यू कैन कॉल इट एज डिफिकल्टी, क्योंकि ये बस डिफिकल्टी है जो इन्हें फेस करनी है और जिसे इन्हें कोप अप करना है. सो मूविंग अहेड विद द लास्ट एज ग्रुप, दैट इज 10 to 13. डिफिकल्टी विद ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हम करते हैं ना, अपना टेबल प्रॉपर्ली समेटते हैं, अपना कबर्ड प्रॉपर्ली सजाते हैं, बेडरूम प्रॉपर्ली संभालते हैं, पूरा सेटअप प्रॉपर करते हैं. ये बच्चे नहीं कर पाते हैं, अपनी चीजों को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं. इनका बेडरूम, इनका डेस्क सब कुछ मेसी रहेगा, क्योंकि प्रॉपर जगह में कैसे रखना है एंड ऑल ये इन्हें पता ही नहीं होता है. पता होता है बट नहीं कर पाते, आई मीन टू से. सेकेंड, डिफिकल्टी विद क्वेश्चंस दैट आर ओपन एंडेड, स्पेशली ऑन टेस्ट. इन्हें क्योंकि लिखने, पढ़ने, बोलने में इन्हें जो डिफिकल्टी फेस होती है उसके वजह से जो टेस्ट होते हैं स्कूल्स एंड ऑल में, वो टेस्ट के क्वेश्चंस को समझने में इन्हें थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है. तो क्वेश्चंस को वो आंसर्स नहीं कर पाते हैं. इनकी हैंड राइटिंग बहुत गंदी होती है, बैड हैंड राइटिंग होती है. डिफरेंट स्पेलिंग्स, मतलब जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल द, आई विल टेक अगेन. एक ही पैराग्राफ में हम द कितनी बार यूज करते हैं. तो ऐसे बच्चे क्या होता है, द यहाँ पे ऊपर लिखा THE, नीचे लिखेंगे TEH, फिर उसके नीचे लिखेंगे HTE. मतलब एक ही वर्ड है, एक ही पेज है, बट फिर भी उनकी स्पेलिंग्स अलग रहेंगी, क्योंकि वो उनका ब्रेन प्रोसेसिंग है स्लो, इट्स नॉट एट अ गुड पेस राइट नाउ. तो उन्हें वो प्रॉब्लम्स होती हैं. फिर रीडिंग आउट लाउड, यानी कि जो हम रीडिंग करते हैं ना स्कूल में, टीचर्स बोलती है यूजुअली खड़े हो जाओ एंड पढ़ो, ये चैप्टर पढ़ो, तो वो भी इन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होता है. एंड ये लोग हेट करते हैं टेस्ट को. हम भी करते हैं बट ये लोग थोड़ा ज्यादा करते हैं हेट टेस्ट को. इन्हें दे प्रिफर टू अवॉइड द टेस्ट. Trouble with comprehension of reading as well as maths concepts, difficulty with following class discussion and poor class participation. मतलब जो पैराग्राफ्स, जैसे कि मैंने बोला पैराग्राफ्स पढ़ने में उन्हें प्रॉब्लम आएगी. मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स जो हम सीखते हैं बचपन में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहेंगे वो भी इन्हें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इनको नंबर्स एंड ऑल में ही प्रॉब्लम्स आती हैं.
लास्ट जो क्लास के डिस्कशंस होते हैं, बच्चे मिलके बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, तो उस चीज़ों में भी ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये लोग अपने आप को एकदम बोलते हैं ना, अलग ही रखते हैं। कोई इन पे अटेंशन नहीं देगा तो फिर ये लोग अपने आप को अलग रखेंगे। इसलिए मैंने कहा कि प्लीज गिव सम अटेंशन, गिव सम सपोर्ट, गिव सम लव टू देम, सो दैट उनकी पार्टिसिपेशन बढ़े, इन शॉर्ट, सो दैट वो अपने आप को नॉर्मल समझे एंड वो आपके साथ सीखे, भले ही स्लो प्रोसेस में, बट सीखे. So here I will like to end my part, and I will hand over to my partner, Miss Anushka Dhande, who will tell you more about this learning disability. So Anushka, you may continue, please. Thank you, Pragya. Now, up till now in our presentation, we have seen like what are learning disabilities, वो कैसे होते हैं, कौन से types होते हैं. हम लोग अपने children में how would we identify them? Now let's say the causes कि क्यों होता है learning disabilities. Now basically तीन causes हैं. Genetic, it can be due to development of brain or due to environmental influences. Now, what do I mean by genetic? Like if there is a learning disability to someone in our family, it may happen, not always, but it may happen that this disability would be observed to other children in the family too. Now, a counterclaim is that the children might just be learning from the adult's behavior. The next reason is development of brain. In the sense, during pregnancy, maybe due to the reasons like complications during birth, due to the lack of oxygen, अगर brain के development के वक्त अगर oxygen की कमी हो और else premature birth हो or else during pregnancy the mother is ill or else had to go through the accidental conditions, there are possibilities that she may suffer from the fetus may suffer from learning disability. The next reason is environmental influences. Now, the infants and the children are particularly susceptible to environmental factors like toxins or natural nutrients deficiency. The toxins can be due to the different allergies or else the medications, also due to the nutrition deficiency. ये जो factors है, this may lead to the its influence on the learning centers of brain. जो brain के learning centers पे इसका influence होगा, इसके वजह से it would cause learning deficiency, learning disability. Moving ahead to diagnosis and test, we have seen what happens, how it happens, and how to identify. Now let's see diagnosis and test. Once I get to know that yes, my child has this learning disability, how would we treat that children? Let's see one by one. Now first, mostly all this diagnosis is mostly done once once the child starts going to school. The educators, whoever would be teaching that child, would use RTI process or the response to intervention process, जिसमें they would be keeping a check कि student की progress कैसे हो रही है, in order to identify the disability type. For this, they would expose the child to different types of methods so that they would identify कि हमें कौन सी type की disability है. Then the treatment, हम लोग treatment कैसे करेंगे? So far as now, there is no cure to learning disabilities, but काफ़ी सारे methods हैं which would help us to cope with this disability. In fact, बहुत सारे individuals without treatment lead their disability lead along with their disability to lead a successful life. Some of the treatments, अगर treatment की बात करनी है तो these may include first school that specialize in teaching children with learning disability or else export-led programs. स्कूल के अलावा हम लोग एक्सपोर्ट लेक प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं जिसके थ्रू children will learn to tackle with this learning disability. Then next, they can undergo special tutoring at home along with therapy. जो schools होते हैं special export led programs, इसके साथ साथ अगर special tutoring हो, special therapy हो, तो they can overcome this learning disability and normalize their living. Now, along with these programs and different schools and everything, we have another also option we have another way to
do, to overcome some of the disabilities, like in ADHD, that is attention deficit hyperactivity disorder, they can be relieved with the help of medications. Medications के through ये disease ADHD cure हो सकता है. Next, talking about the special equipment, like there are specialized laptops or else audio tapes which help children with learning disabilities to tackle and to develop themselves and normalize their life. Now, are there any measures by government for children with learning disabilities? The answer is yes. Government provides us a unique disability ID. That is a unique ID for people with disabilities. The Department of Empowerment of Person with Disability started the UDID project to encourage transparency and efficiency and ease of delivering the government benefits to the people with disability and ensure the uniformity so that these people can overcome their learning disability and can lead to a normalized life and can overcome every aspect. So as we saw that there are different types of learning disabilities that we can treat, we don't have a treatment for them, but yes, we can overcome them and lead a very successful life. But though we have so much methods to overcome them and to the most important thing which we need is support. The learning disability does not mean that your child has lesser intellect, and this point I can prove it with the help of few examples which we had around and which we have uh, seen or which we all know. We have all heard of Winston Churchill, the Prime Minister of UK during the World War II, and the very famous Walt Disney, founder of the Walt Disney Corporation, also called as Disney. But do you think they would be having any learning disability? The answer is yes. They had learning disability of dyslexia. But did that stop them? No. They overcome that disability, and yes, they are an inspiration with or without their learning disability to the people. The next is the very famous the Harry Potter, the Daniel Radcliffe. Well, do you think he may be having any learning disability? Yes, he had. He had dyspraxia. Dyspraxia is a learning disability wherein there is no proper coordination. So then too, he overcame them, and now he is a great inspiration for us. Tom Cruise, a very famous actor, he too had dyslexia. So looking at these examples, we just get to know that there is no way that this learning disability can hamper their opportunities. The only thing is we need to motivate them that yes, you can do it. So just the thing is we have to stop labeling and start living. With this, I would like to stop and thank you for your patient listening. Thank you. Thank you so much, Anushka. Thank you so much, Pragya, for such an informative session on learning disabilities. So that's it for today, folks. But make sure to tune in at a 9 p.m. episode on the same platform. Till then, stay safe, stay healthy, because health comes first.